हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीएल शर्मा, मैथ साहब, डिस्कसिंग चैप्टर 8 of class 10th NCERT mathematics, that is introduction to trigonometry. In this video I will be discussing with you brief notes and NCERT examples number 1, 3, 4 and 5. This is very important for CBSE students, for the students of RBSE, for NTSC, and for any other competitive exam. So let us start here. First of all, we have to discuss that what is a trigonometry. So trigonometry here is the branch of mathematics which deals with measurement of angles and the problems related to relationship between sides and angles. Students, we know that there are three sides and three angles of a triangle. So there are three components in a triangle. Sorry, six components in a triangle, three sides and three angles. And what is the relation between these angles and these three sides? That we discuss in trigonometry. But in your 10th standard, we have to discuss trigonometry in which one angle is 90 degree. So all the cases we take here will be in a right triangle, means right angle triangles, means one angle is 90 degree. एक एंगल राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल होगा, उसको हम तीनों साइड्स और दो एक्यूट एंगल्स है, उनके बीच में रिलेशन क्या होता है उसका हम डिस्कशन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में. So here, first of all, we know that if there are three sides, हमें पता है कि तीन sides होती है किसी राइट एंगल ट्राइंगल में, किसी भी ट्राइंगल में, तो इनमें जो रेशियोज होता है, means a ratio of all these three sides, base, altitude, hypotenuse, ये three sides है, इन three sides के six ratio form हो सकते हैं, उन six ratio को ही हम trigonometric ratio कहते हैं. So यहाँ पे आपकी क्लास 10th में हमें एक right angle triangle consider करना पड़ेगा, and these ratios are always defined with respect to acute angle A or acute angle C. Here you see, यहाँ पे in this triangle one angle that is B angle is right angle, means ये 90 डिग्री है. तो ये दो acute angle हुए, एक acute angle A and other acute angle is C. इनमें इनको लेकर के हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करेंगे, मींस इसके साइड्स हम फाइंड आउट करेंगे. यहाँ पे इन थ्री साइड्स को लेके सिक्स रेशियोज फॉर्म हो सकते हैं, और इन सिक्स रेशियोज को डिफरेंट यहाँ पे इनका नोमेनक्लेचर है: साइन थीटा, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta, and cot theta. Yes, here theta is an acute angle, means either angle C or acute angle A, because one angle B is 90 degree. So जब भी ये थीटा की बात होगी यहाँ पे आपके, ये हमारे acute एंगल होगा, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री पहले से हमें गिवन है. So actually, what do we mean by sin theta or cos theta or tan theta? स्टूडेंट, ये देखिए कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में तीन साइड्स होती हैं. इन तीन साइड्स में हम देखेंगे कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज sin थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज cos थीटा, एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज tan थीटा. मींस साइड्स का जो रेशियो होता है, इन्हीं को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं. और इन परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज को लेके हम छह रेशियोज बना सकते हैं. देखिए, परपेंडिकुलर दैट इज परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज. हम छह रेशियो कैसे बनाएंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस. Then the reciprocals, hypotenuse upon perpendicular, hypotenuse upon base, and base means that is base upon perpendicular. ये जो सिक्स रेशियोज होते हैं किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, इन्हीं को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं, और इनको डिफरेंट यहाँ पे नाम दिया गया है. देखिए, here you will see here that perpendicular upon hypotenuse is sin theta. Theta is acute angle. If this angle is theta you can take any acute angle, means 30 degree, 45 degree, 60 degree. This can be possible here. Cos theta is base upon hypotenuse.
tan theta is perpendicular upon base, means ratio of perpendicular and base. And the cosec theta is reciprocal of sine theta, that is hypotenuse upon perpendicular. The sec theta is reciprocal of cos theta, that is hypotenuse and base. And the cot theta is reciprocal of tan theta, that is base upon perpendicular. बट यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि विच साइड इज परपेंडिकुलर, कौन सी साइड बेस है और कौन सी साइड हाइपोटेन्यूज है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल. तो स्टूडेंट ये जो साइड्स हम आइडेंटिफाई करते हैं, दैट परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज एंड बेस, वो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि विच एक्यूट एंगल इज वी आर कंसिडरिंग और विच एक्यूट एंगल इज अंडर कंसिडरेशन. एक राइट ट्राइंगल में दो एक्यूट एंगल्स होते हैं, हमने कौन सा एंगल लेना है, इट डिपेंड्स ऑन दैट. सो हियर इज हाउ टू आइडेंटिफाई साइड्स, मींस परपेंडिकुलर, देन बेस एंड देन हाइपोटेन्यूज. हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू द एक्यूट एंगल अंडर कंसिडरेशन. यहाँ पे थीटा एक किसी एंगल से रिलेटेड है. तो सी हियर द आइडेंटिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हियर यू विल सी हियर इन राइट एंगल ट्राइंगल, मींस एक एंगल तो 90 डिग्री हमारा होगा ही होगा, दिस एंगल इज 90 डिग्री. अब यहाँ पे द हाइपोटेन्यूज इज द साइड जस्ट अपोजिट टू द 90 डिग्री एंगल इन अ राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल के जस्ट सामने वाला साइड हमारा हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है. दिस एंगल इज 90 डिग्री, सो दिस BC इज एक्चुअली hypotenuse, right? And what is perpendicular? Perpendicular is the side just opposite to acute angle under consideration. हमने देखा कि in a right angle triangle there are two acute angles. एक acute angle इस फिगर में B है और एक acute angle C है. इस पे डिपेंड करता है कि हमने कौन सा acute angle कंसिडर किया है, एंगल B और एंगल C. If we consider four acute angle, you can say B, four acute angle C here. देखिए यहाँ पे फोर एक्यूट एंगल बी के लिए देखिएगा यहाँ पे बिग फोर एक्यूट एंगल बी. देखिए बी, इसके पहले हाइपोटेन्यूज को फाइंड आउट करते हैं. तो हाइपोटेन्यूज इज द साइड जस्ट अपोजिट टू 90 डिग्री. ये 90 डिग्री है तो इसके जो सामने वाला साइड है दैट इज हाइपोटेन्यूज. सो वी कैन राइट हाइपोटेन्यूज इज बेस. ओके, देन परपेंडिकुलर, कौन सा साइड परपेंडिकुलर हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर इज द परपेंडिकुलर इज द साइड जस्ट ऑपोजिट टू एक्यूट एंगल अंडर कंसिडरेशन. जो एक्यूट एंगल हमने कंसिडर किया है, यहाँ पे हमने एक्यूट एंगल बी कंसिडर किया है, उसके ऑपोजिट साइड मींस उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा. सो इन केस ऑफ एक्यूट एंगल बी द परपेंडिकुलर इज AC and the remaining third side is base, so that is perpendicular and the remaining third side is base. Yes, that is base. आप यू भी ले सकते हैं कि ये जो एक्यूट एंगल हमने कंसिडर किया है उसका जो एडजेसेंट साइड है, देखिए एक्यूट एंगल के एडजेसेंट दो साइड है, वन साइड इज हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज को तो लेना नहीं है, so the other side will, the adjacent side will be base. So in case of this acute angle B, the base is AB. इस तरह से हम किसी भी acute angle के लिए तीनों साइड का hypotenuse, perpendicular and base को पहले we have to identify. Now for acute angle, अगर हमने acute angle change यहाँ पे किया, देखिए now for acute angle C, this angle is acute angle C, this angle, this angle, this angle, this angle. पहले इस acute angle C के लिए हमें hypotenuse find out करना है, and we know the hypotenuse is the side just opposite to 90 degree. So ये 90 degree है और इसके सामने वाला side है BC. So in case of acute angle C, the BC is hypotenuse. So here the BC is hypotenuse. Then perpendicular.
परपेंडिकुलर इज द साइड जस्ट अपोजिट टू द एंगल अंडर कंसिडरेशन। जो एंगल हम कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे एंगल सी कंसिडर कर रहे हैं एक्यूट एंगल, उसके सामने वाला साइड ए बी है। तो इन केस ऑफ एक्यूट एंगल सी, ए बी इज perpendicular, means this is perpendicular, this is hypotenuse। तो रिमेनिंग थर्ड साइड है यहाँ पे, रिमेनिंग थर्ड साइड है AC, ये इसके लिए बेस होगा। तो बेस विल बी AC। तो आपने देखा यहाँ पे कि जैसे ही हमारा एक्यूट एंगल चेंज होता है, परपेंडिकुलर एंड बेस भी चेंज हो जाता है, हाइपोटेन्यूज रिमेन सेम। हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहेगा क्योंकि 90 डिग्री एक ही है। देयर आर टू एक्यूट एंगल्स, एज वी चेंज एक्यूट एंगल, द परपेंडिकुलर, द बेस एंड द हाइपोटेन्यूज means the perpendicular and base are changed. This is very, very important. So yes, the very important thing here is, yes, the sin A, that abbreviation है इसका, short में हम इसको लिखते हैं sin A। Cosine of A, in short we write cos A। Tangent of A, in short we write tan A। That is cosecant of A, in short we write cosec। That is second, that is secant of A, in short we write sec A। And the last cotangent, in short we write cot। So students, हमारे पास 6 trigonometric ratios हुए, sin A, then cos A, then tan A, then cosec A, then sec A, and then 6 means cot A। ये जो 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, वो राइट एंगल ट्राइंगल्स की किसी दो साइड का रेशियो हमें रिप्रेजेंट करते हैं। So here are, these are 6 T ratios. T ratios means trigonometric ratios. We write here T ratio means trigonometric ratios. Yes. And we come to here, see here. What are the, we have to identify here for acute angle B, the perpendicular, base, and hypotenuse. Here you see here that the means sin theta is perpendicular upon hypotenuse, cos theta is base upon hypotenuse, tan theta is the ratio of perpendicular upon and base, cosec theta is ratio of hypotenuse and perpendicular, sec theta is the ratio of two sides hypotenuse and base, and cot theta is the ratio of base and perpendicular here. So we are taking one example here. Yes, yes. This is for acute angle P. So first of all, we have to identify फोर एक्यूट एंगल बी। तीनों साइड का हमें पता लगाना होगा। सो फोर एक्यूट एंगल बी, हियर एक्यूट एंगल बी इज दिस। देखिए, पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे हाइपोटेन्यूज को। सो द हाइपोटेन्यूज इज द साइड जस्ट अपोजिट टू 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज है वो है means BC, so that is, sorry, this is hypotenuse। So hypotenuse is BC। Yes, then we identify perpendicular। Perpendicular is the side just opposite to the angle under consideration। हमने जो एंगल कंसिडर किया है वो B कंसिडर किया है, उसके सामने वाले साइड देखिए B है, उसके ऑपोजिट साइड देखिए AC। So here AC is base for acute angle B। So we can write here AC। And the remaining third side is base। यहाँ पे we have taken, this is hypotenuse, this is perpendicular, so remaining third side is base। So base here is
The base here is A. तो इस तरह से हमने एक्यूट एंगल ए के लिए तीनों साइड का पता लगाया. Means that is this is acute angle B. Hypotenuse is base C, so we can further write here C. Sine B, that is perpendicular and base upon hypotenuse. So see here, perpendicular for that is AC and hypotenuse is BC. Cos B is equal to base upon hypotenuse. So base is AB and hypotenuse is BC. Then for tan, tan is equal to tan theta, means angle of tan is equal to perpendicular upon base. So for angle acute angle B, perpendicular is AC and base is AB. And now see, cosec is the reciprocal of sine theta. Sine का उल्टा करेंगे. Sine B is equal to perpendicular upon hypotenuse, and cosec will be hypotenuse and upon perpendicular. So sine का reciprocal perpendicular होता है, means hypotenuse upon base होगा. So that is BC upon AC. Sec is the reciprocal of cos. Cos is base upon hypotenuse. Sec will be hypotenuse upon base. So hypotenuse is BC and base is AB. And cot is reciprocal of tan. Tan is perpendicular upon base. So cot is base upon perpendicular. Here base is AB and perpendicular is AC. Thus we find all the 6 trigonometric ratios for the acute angle B. यहाँ पे हमने जो एंगल अंडर कंसिडरेशन है, जो एक्यूट एंगल अंडर कंसिडरेशन है, वो एंगल बी है इस फिगर में. तो हमने तीनों साइड को पहले आइडेंटिफाई किया और फिर हमें पता ही है कि ये तीनों साइड कोई 6 रेशियो बनाती है. साइन उन 6 रेशियो को हम डिफाइन करते हैं, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोसेक. What happens students if I consider now angle acute angle C? हमने यहाँ पे acute angle B कंसिडर किया है. अगर हम acute angle C कंसिडर करें तो क्या रिलेशन इसमें एस्टैब्लिश होंगे, देखिएगा यहाँ पे. For acute angle C is this here, this. So say first of all we have to identify here the hypotenuse. हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है. सो BC इज हाइपोटेन्यूज. एंड देन परपेंडिकुलर को आइडेंटिफाई करते हैं. ये हमने एक्यूट एंगल C कंसीडर किया है. इट्स अपोजिट साइड इज AB. परपेंडिकुलर इज द साइड जस्ट अपोजिट टू द एंगल अंडर कंसिडरेशन. सो परपेंडिकुलर यहां पे हुआ, that is AB. And the remaining third side is base. So base is equal to AC. You can write here that is hypotenuse and that is perpendicular and this AC is base. Now we start writing here that what is sine C? We consider here the acute angle C. Acute angle sine means perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular किसके लिए? Acute angle C के लिए, जो हमें यहाँ पे वेरीफाई हम कर लिया है. So what is perpendicular here? That is AB. And what is hypotenuse? BC. Cos C is base upon hypotenuse. Base is AC and hypotenuse is BC. Tan is perpendicular upon base. Perpendicular in this case is AB and base is AC. And now the three other sides means ratios are, we know that cosec is the reciprocal of sine. So that is hypotenuse upon perpendicular.
So BC upon AB. Sec is reciprocal of cos, means cos is based upon hypotenuse. So sec will be hypotenuse upon base. Hypotenuse is BC and base is AC. Sorry, here, yes, okay. Hypotenuse is BC and base is AC. And the chord is reciprocal of tan. So chord is perpendicular upon base. So chord will be base upon perpendicular. So that is AC upon AB. राइट, इस तरह से हमने देखा कि अगर एक्यूट एंगल चेंज होता है तो परपेंडिकुलर एंड बेस चेंज हो जाता है, हाइपोटेन्यूज रिमेन सेम। हाइपोटेन्यूज देखिए दोनों ही केस में, इन केस ऑफ एक्यूट एंगल सी ए बी इज परपेंडिकुलर, इन केस ऑफ एक्यूट एंगल बी ए सी इज परपेंडिकुलर, दोनों ही केसेस में हाइपोटेन्यूज रिमेन्स सेम। एंड नाउ, yes, very important here. The ratios defined above are abbreviated, means short form as sin A, cos A, tan A, cosec A, sec A, and cot A respectively. Note that the ratio cosec A, sec A, and cot A are respectively reciprocal of ratio sin A, cos A, and means tan A, means cosec A is reciprocal of sin A. एंड sec A ये रेसिप्रोकल होता है cos का, एंड cot A is reciprocal of tan, right? Number one. Number two, note that the symbol sin A is used as an abbreviation for the sign of angle A. We write sin A means we can say sine of acute angle A or angle A, but this is not sine into A. इनका ये प्रोडक्ट नहीं होता है. That is of sine of angle A, means angle A के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो क्या होता है, दैट इज मींस दैट जब साइन ए आएगा मींस ये रेशियो है दो साइड्स का, ये एंगल से इसका मल्टीप्लाई नहीं होता, इट इज रीड एज साइन ऑफ एंगल ए, लेकिन हम शॉर्ट में इसको कहते हैं साइन ए। एंड नाउ एग्जांपल नंबर 1 of your NCERT. Yes, given that tan A is 4/3, means means perpendicular upon base, that is the ratio of tan A. tan A का रेशियो परपेंडिकुलर बेस होता है, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, उसमें 1 रेशियो दे रखा है और हमें रिमेनिंग 5 रेशियो को फाइंड आउट करना है, लेकिन रेशियोज के लिए हमें तीनों साइड्स का पता होना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे जो एक्यूट एंगल कंसिडर कर रहे हैं वो एक्यूट एंगल है हमारे पास, एक्यूट एंगल ए। सो 4 first 4 means acute एंगल, तीनों साइड को वेरीफाई हम करेंगे। ये हमारे पास एक्यूट एंगल ए रहा, ये रहा, राइट, ओके। सी फर्स्ट हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज एक्यूट एंगल के लिए एसी है, मींस पहले हमने एक ट्राइंगल बना लिया है, उसमें एक एक्यूट एंगल ए रखा है हमने, एसी है यहाँ पे, ये देखा ना, एसी, because AC is the side just opposite to 90 degree. 90 degree के सामने वाली साइड को किसी ट्राइंगल में हो तो उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। Number 2, then we identify perpendicular for the acute angle A, for the acute angle A. जो acute angle हम कंसिडर करते हैं उसके सामने वाली साइड होती है, that is perpendicular. So here perpendicular is means it is already given. See here, पहले देखते हैं क्या दे रखा है। It is given tan A is 4/3, means perpendicular upon base is 4/3. So we can say let perpendicular is 4K, then base will be 3K.
परपेंडिकुलर जो रेशियो है, हमने 4k इसका परपेंडिकुलर लिया, तो देखिए ये है इसका बेस, क्योंकि परपेंडिकुलर एक्यूट एंगल के लिए देखिए हाइपोटेन्यूज AC है, तो परपेंडिकुलर इसके लिए है मीन्स say perpendicular here is the means BC, and base here is the remaining third side, that is AP. Perpendicular 4k, that is 4k. Base that is 3k, that is 3k हमने यहाँ पे मेंशन किया. BC is 4k and AB is 3k. But for the ratios we need all three sides. हमें तीनों साइड की जरूरत पड़ेगी. यहाँ पे perpendicular is given, base is given, but hypotenuse AC is not given. So using Pythagoras theorem, here we use Pythagoras theorem. So using Pythagoras theorem means AC means hypotenuse square is equal to perpendicular square, that is 4k square, base square, that is 3k square, that is 16k square plus 9k square, that is 25k square, and on further simplification it is 5k. So here you will see that hypotenuse is 5k. This is 5k. अब हमें यहाँ पे तीनों साइड मिल चुकी है. The perpendicular is 4k, the base is 3k, and the hypotenuse is 5k. 5 multiplied by 5 times of k. Now हमें अब बारी बारी से one by one we have to find out means all the trigonometric ratios. Out of all 6 trigonometric ratios, 110 is given. And now we have to find out the remaining trigonometric ratios. So देखिए, here we'll see first of all sine A. Sine A is given by perpendicular upon hypotenuse. Here perpendicular is 4k and hypotenuse is 5k. So the answer is 4 upon 5 answer. First is perpendicular is 4k, hypotenuse is 5k, k and k cancel, so that is 4 upon 5. Number 2, that is cos of angle A. In short, we say cos A. That is base upon hypotenuse. Base is 3k and hypotenuse is 5k. That is base. So k and k cancel. That is 3 upon 5 answer. And third is cosec A. Cosec A is hypotenuse upon perpendicular, that is 5k upon 4k, k and k cancel, that is 5 upon 4 answer. Fourth is sec A. Sec A is hypotenuse upon base, that is 5k upon 3k. That is 5 upon 3 answer. And last is cot A. Cot means base upon perpendicular. So that is 3k upon 4k. K and k cancel. That is 3 by 4 answer, and that is 5th. और ये हमें पहले ही एक दे रखा है, that is tan है, तो उसको फाइंड आउट करने की जरूरत हमें नहीं है. आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें, ये हमारा आंसर है. देखिए अब देखते हैं. Sin A, that is 4 upon 5. Cosec A इसका रेसिप्रोकल है, that is 5 upon 4. Cos A is 3 by 5.
sec इसका रेसिप्रोकल है, that is 5/3, and tan A is 4/3, cot इसका रेसिप्रोकल है, that is 3/4. So thus we got all the 6 ratios. Out of 6 ratios, means 1 is already given. 6 रेशियो में से एक पहले से गिवन है और हमने 5 हमने अब फाइंड आउट कर लिया है. Now example number 3 here. Consider triangle ABC, right angle at C. This is 90 degree. This angle is 90 degree. ये हमने 90 डिग्री कंसीडर किया है. और फिर कौन सा एक्यूट एंगल कंसीडर करेंगे? ये हमारा एक्यूट एंगल, सॉरी 9 डिग्री ये है, और ABC is 90 डिग्री, मींस ये जो एंगल है ये हमें एक्यूट एंगल कंसीडर करते हैं. हमें पता है कि ये AB 29 सेंटीमीटर यूनिट, सॉरी, एंड BC is 21 है. हमें तीनों साइड का पता लगाना जरूरी है, बट सिंस इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, सो यूजिंग, पहले हम 3 साइड्स का पता लगाएंगे. पाइथागोरस थ्योरम. देखिए, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज AB स्क्वायर. The sum of the square of two sides is equal to the square of the longest side, means square of hypotenuse. So AC square is equal to AB square minus BC square. AC square is 29 whole square minus 21 whole square. So that is 841, that is 441, and the difference is 400. So AC is square root of 400, that is 20 units. Yes. So हमारा जो AC है that is 20. अब हमने ये तीनों साइड फाइंड आउट करने के बाद ये पता लगाएंगे कि फॉर एक्यूट एंगल थीटा हियर 4. देखिए, हमें एक्यूट एंगल थीटा, इस थीटा के लिए तीनों साइड्स का पता लगाना पड़ेगा कि विच साइड इज हाइपोटेन्यूज, विच साइड इज परपेंडिकुलर, एंड विच साइड इज बेस. सो पहले हम फाइंड आउट करेंगे, पता लगाएंगे मींस हाइपोटेन्यूज का. सो हाइपोटेन्यूज इज, सी हियर, hypotenuse. Hypotenuse is the side just opposite to the 90 degree. तो देखिए, ये जो आपका है BAB, वो hypotenuse है, और hypotenuse is AB, that is 29 unit. Then perpendicular, acute angle हमारा थीटा है, उसके सामने ये जो साइड है AC है, और AC है 20 सेंटीमीटर. That is AC, so not centimeter, that is 20 unit. And the remaining third side is base. The base is BC, and that is 21 unit. You can write hypotenuse, and that is 20 unit, and base is, yes, तीनों साइड का हमें पता लगाने के बाद, now we come to the question, cos theta is what, sin theta is what, and means base is what. So here, that is means hypotenuse, that is base, and this is perpendicular. Okay, now we come to the now first we come to sin theta. Sin theta is perpendicular upon hypotenuse. Here perpendicular upon hypotenuse is 20 upon 29. Then cos theta is base upon hypotenuse, so that is 21 upon 29. यहाँ पे perpendicular, base and hypotenuse, here it is written. Okay. Now student, one important thing is when it is written cos square theta, इसका meaning ये होता है cos theta whole square. Right. So part first, that is
cos square theta plus sin square theta. Cos square theta is 21 upon 29 whole square. Sin square theta, that is 20 upon 29 whole square. That is 21 whole square, 441, 841 plus 20 square is 400 upon 29 square, that is 841. Taking LCM 841, that is 441 plus 400, that is 841 upon 841, that is one answer. So the answer of the first part will be 1. Sin square theta plus cos square theta is 1. That is the answer of the first part. And for the second part, that is cos square theta minus sin square theta. Second part is cos square theta minus sin square. Cos square theta, see here, cos square theta is 20, means 441 upon 841. Cos square theta is 21 upon 29 whole square, that is 441 upon 841. So we can write 441, 841. And sin square theta is 400 upon 841. So we can write 400 upon 841. You can take 841 as LCM. So that is 441 minus 400. हमने 841 LCM लिया and ये आया 441 minus 400, that is 41 upon 841. This is the answer of the sixth part. So we can say that is equal to 41 upon 841. इस तरह से cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आया 1 एंड cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर का थीटा का वैल्यू है 41 अपॉन 841. नेक्स्ट एग्जांपल, यस, एग्जांपल नंबर 4. इन अ राइट ट्रायंगल देखिए, राइट एंगल एट B 90 डिग्री है. इफ tan A is equal to 1, then verify that 2 sin A cos A is equal to 1. पहले हमें ये दे रखा है, देखिए, what is given, tan A is equal to 1. Tan A means perpendicular upon base. What is the ratio? 1 upon 1. So हमें सपोज करेंगे, ले perpendicular is 1k, then base is also 1k. यहाँ पे acute angle हमारा ये है, this is acute angle, yes, this is acute angle A. तो perpendicular हमारा हुआ BC, so we can say perpendicular is BC is 1k and base is AB, that is 1k. We can write here that is 1k, that is also 1k. But using Pythagoras theorem, we have to find out the third side. So therefore now AC hypotenuse is equal to means AB square plus BC square using Pythagoras theorem, that is 1k square plus 1k whole square, that is k square plus k square, that is k square, so we can say root 2 into k. Yes. Now sin A, what is sin A? अब हमें sin A का पता लगाना पड़ेगा. Sin A, that is sin A is perpendicular upon hypotenuse, that is perpendicular, sorry, hypotenuse, ये देखिए hypotenuse is already, that is hypotenuse is under root 2k. So
Sin A perpendicular upon hypotenuse, that is 1k upon root 2k, k and k cancel, that is 1 upon root 2. Second, cos A. Cos A is base upon hypotenuse. Base is 1k. Hypotenuse is root 2 into k and k cancel, that is 1 by root 2. Now, therefore, now we come to this point. Yes. 2 into sin A, in place of sin A, you can write 1 upon root 2. Then cos A, in place cos A, you can write 1 upon root 2. So that is 2 upon root 2 into root 2, that is 1, and that is right hand side, and this is verified. So 2 sin A cos A in this case, that is 1. That is right hand side, and this is verified. This is all about example number 4. Next example, example number means 5. Yes. Please read the question carefully. This example is example number 5. In triangle OPQ, right angle at P. P right angle है, means P का जो measurement है वो 90 degree है, and this is 90. And OP is 7 centimeter. OP is 7 centimeter. OQ minus PQ is 1 centimeter. Means OP minus PQ means this. means OQ means ये OQ और ये PQ का डिफरेंस 1 सेंटीमीटर है. सो हम ऐसे कहेंगे कि लेट, देखिए लेट QP is equal to X centimeter, and when it is given OQ minus PQ, that is 1. So OQ is equal to PQ plus 1. PQ, we have PQ or OP and PQ, that is one and same thing. So we can write X plus 1. So here, if we consider this X unit, then this will be X plus 1 unit. So right here, so for acute angle, पहले हम इस x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि x का वैल्यू कितना है. So now using Pythagoras theorem. Now using Pythagoras theorem, in right triangle, that is QPO or OPQ, PQ square plus OP square is equal to OQ square by Pythagoras theorem. That is PQ means X square plus 7 square, that is X plus 1 whole square. That is X square plus 7 7s are 49, and X plus whole square is X square plus 2X plus 1. X square and X square cancelled. So we can write 2x is equal to 49, 9 minus 1. 2x is 41, or x is 48 by 2, that is 24. So here student, ये x 24 है. So we can write here this x is means 24, and this will be x plus 1 means 21 plus that is 25, and that is 7 सेंटीमीटर. तीनों साइड का हमें पता चल चुका है.
Now we have to find out sin cube. Means हमें acute angle Q consider करना पड़ेगा. After getting all three sides, we have to determine which side is perpendicular, which side is base, and which side is hypotenuse. हमें देखना पड़ेगा कौन सा साइड परपेंडिकुलर है, कौन सा साइड बेस है. Yes. So again see here now. For acute angle Q. This is acute angle. Hypotenuse is the means OQ, that is 25 centimeter. Then perpendicular is the side just opposite to the angle under consideration. और यहाँ हमें एंगल क्यू कंसिडर करना है, तो ये OP is the perpendicular and OP is the perpendicular and that is 7 centimeter. And the remaining third side is base. So here PQ is base, that is 24 centimeter. हमने तीनों साइड एक्यूट एंगल क्यू के लिए फाइंड आउट किया, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस. नाउ साइन क्यू. Sine of cube, that is perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular is 7 and hypotenuse is 25. This is the answer. And cos cube, that is base upon hypotenuse. Base is 24. Hypotenuse is 25. So this is the answer of this question. Thus we have got the value of means sine theta and sine cube and cos cube. So that's all, student. We discussed here example number 1, 3, 4, 5 of your means chapter number 8. So that's all for this class. Thank you.